So as I said that you can make your life easy and you can also make your life difficult when you have this sort of relations with your neighbor. Now, why I'm saying that? Because your performance at workplace, that depends on the relationship with the labor. If your relationship with the labor and all the other employees are good, then your performance at the workplace will also be increased. On the other way, if your relationships with the labor and with the employees is not good, then again the performance at the workplace will be affected. So managers have made difficult sort of uh, so I want to say that it is not very easy to develop the good relationships with the labor, because managers have more difficulties with regard to these relations. And research shows that 85% your performance at that depends on the interpersonal relationships. If your interpersonal relationships with your labor and with your employees is good, then there are the 85% chances that your performance at the workplace will also be good. So let's formally define the labor relations. Labor relation means interactions with the labor, how people and labor deal with each other, how comfortable are the relationships, and how much good will do you have in the mind of other people. So it is an art of using systematic knowledge about the human behavior to improve the personal and job effectiveness. The effective use of labor relation helps both for the individuals and the organizations. So this is a two-way process. If you have the good relations with your labor, then your individual performance will also be improved. On the other way out, if you are having the good relations with the labor, the organizational overall performance will also be increased. So this is the importance of this topic or subject, that is the labor relationship with the management or the managers. Now let's class, here I want to discuss three very important concepts. I would say these as the types of selves. One main question to develop and improve the human labor relationship is to understand yourself. There are three aspects of a person. Now, these are very important aspects and concepts. ये जो concepts हैं इनको हम कहते हैं, that is the private self, the other one is the projected self, and the third one is the perceived self. Now what is the private self? Now private self means how I see myself. That is the private self, the personal of a person life. Yani how you see yourself, that is your private self. Now, another important concept which is used in this scenario is the projected public self. Projected public self, which means that what the person would like to project in the public, which means that how I like project myself before the public, what I want people to know me as a kind of person. It is not necessarily different what you like to project and what people perceive you. So projected public self is related to that how I like the different people to see myself. That is the projected public self. And third, very important concept again is the perceived public self. The way people see us, the behavior of other people towards you. When you ask them to do something, they will do as they know you, or they will not do the way you have ordered them or you have requested them. So that is related to the perceived public self. That is the behavior of the other people towards you. Your image counts a lot. That image actually defines the people to act. If your image is being perceived good in the mind of the laborers and the employees, it means they will act
in the same way you want to do, make them act. That is very important. So class, these are the important concepts which I want to discuss in this class, that is the private self, projected self, and perceived self. Labor relations and job performance, as I said, this is the two-way process. How people do things, how you do, and how the people perceive you. These are a very important thing. Perception is very important. आप लोगों ने पहले भी शायद discuss किया होगा कि how you are being perceived in the mind of the laborers or in the mind of the uh, employees. That is very important. Now let's discuss three another important concepts which are related to the communication. Communication, meaning of communication, that is that may be the written communication or the spoken communication. These three important concepts are considered very important as far as the communication is concerned. The first concept is the pure meaning. The meaning which I use through words, example dictionary. For example, pure meaning, if I want to say something, I want to order some labor to do some work, इसका जो pure meaning होगा, that is the as per dictionary जो meaning होगा, that is the meaning I use through the words. ठीक है, that is the pure meaning. The second concept इसमें जो हम use करते हैं, that is intended meaning, which I want to convey to another person in written or spoken form. This is the meaning I like to convey to you. नाउ प्योर मीनिंग जो था एक प्योरली एक डिक्शनरी मीनिंग था, जो आप डिक्शनरी से देखेंगे या उसका जो एक्चुअल जो मीनिंग होगा जो आपके माइंड में आता है, दैट इज द प्योर मीनिंग. बट इंटेंडेड मीनिंग इज द मीनिंग आई लाइक टू कन्वे टू यू. एंड द थर्ड वन इज द परसीव्ड मीनिंग, द मीनिंग टेकन बाय द people, yani how the people will take that particular words or meaning in their minds, how they will take message you give them. That is the perceived meaning. Again, these three concepts are related to that. अभी हमने डिस्कस किया था private self, projected self, perceived self. As far as the communication is concerned and the behavioral management is concerned, or the sociology is concerned, these are very important concepts. तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि मैं इसको थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लूँ कि व्हाट इज दी, इसको परसेप्शन को आगे जाके हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. But at this point of stage, you should know the difference between pure meaning, intended meaning, and the perceived meaning. The actions of the people actually depends on the meaning they have taken, nor they have intended, which you wanted to convey to other people. So the actions actually depends on the meaning they will understand it. That is the perceived meaning. That's why that is perceived meaning, that is very important. When as a manager you want to say something, you will have to keep in mind that what is the perceived meaning in the mind of the laborers, how he will take it, your words. That is very important. Now, ideal communication हम इसको कहते हैं. Ideal इसका जो क्या होगा, situation क्या होगी कि when the intended meaning and the perceived meanings are the same. यानी when ये जो perceived meaning है, the meaning taken by the people, how they will take message you give them, and the meaning, intended meaning, the meaning I like to convey to you. If both of these meanings are the same and the people take it in the same way, that will be the sort of ideal communication. But it rarely happens, you know. Communication जो है, that is उसमें क्योंकि बहुत से barriers होते हैं, it never happens, or it rarely happens that the intended meaning and the perceived meanings will be considered as the same. Because this there can be the misunderstanding in the mind of the people due to the different perceptions. So the sources of misunderstanding is the thing which you'll have to focus on. Now another important thing, people behave in the form of the groups.
Group behavior against depends on the organizational behavior of large number of people. हम जो कहते हैं like एक union जो है, that is the group of the different people, and that is considered as a group, and they behave on the part of the large number of the people. Or and again that is related to the organizational performance, as I discussed earlier. In the organization जो है, that is the sort of a factory in which there are the different goods and the services which are being produced. If the people work optimally and effectively and efficiently, the communication making the people to act you like to act, जो जैसे भी हमने डिस्कस किया कि अगर उसकी इंटेंडेड मीनिंग और परसीव्ड मीनिंग जो है सेम होंगे and they are acting the way you want to act them, that is again the ideal situation. तो इसमें मैं थोड़ा सा एक आपको डिस्कस करूं, ये जो आपकी ह्यूमन रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, अमेरिकन का डिफरेंट कल्चर है, जापानीज का डिफरेंट कल्चर है, एशियन कंट्रीज का जो है डिफरेंट कल्चर. तो इधर हियर आई वुड लाइक टू मेंशन द जापानीज कल्चर. जापानीज कल्चर जो है दैट इज वेरी पॉपुलर विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिलेशंस एंड विद रिस्पेक्ट टू द लेबर रिलेशंस. नाउ ह्यूमन रिलेशंस में जो जापानीज जो लीडर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या करते थे, व्हाट दे डू, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करते थे, दैट इज द ह्यूमन कंपोनेंट. ठीक है, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस देयर वाज ओनली वन फोकस, दैट इज द ह्यूमन कंपोनेंट. नो इधर एक मैं आपको रियल एग्जांपल दूं. एक असेंबली लाइन थी यूएसए में किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में. उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और उनका जो टारगेट्स जो थे वो अचीव नहीं हो रहे थे. तो यूएसए की कंपनी ने ये टारगेट, जो असेंबली लाइन थी, ये उनको दी जापानीज को कि इसको हैंडल करें और इसको देखें कि इसमें क्या है. नो जापानीज ने उन्होंने उसको अच्छी तरीके से एनालाइज किया, जो असेंबली लाइन थी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, और उन्होंने जो उसकी मोनोटोनी थी उसको खत्म किया, which was actually the style which are being adopted there. इस वेरिएशन जो थी उन्होंने उसको खत्म किया, और अगेन उन्होंने फोकस किया ह्यूमन कंपोनेंट की तरफ. व्हाट इज द ह्यूमन कंपोनेंट. उन्होंने आपस में उनका इंटरेक्शन रिलेशनशिप को बेहतर किया, उनकी आपस में कोऑपरेशन को बेहतर किया, और वो जो असेंबली लाइन थी दैट परफॉर्म्स ऑप्टिममली, और उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत बेहतर हो गई थी. तो जापानीज को अभी आगे भी जाके हम बहुत सी एग्जांपल करेंगे. जापानीज जो कल्चर है दैट इज वेरी पॉपुलर विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिलेशंस. उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के कल्चर्स को देखें तो उसमें ये चीज बड़ी कॉमन आपको नजर आएगी. लॉयल्टी बहुत नजर आएगी. लॉयल्टी दैट इज द जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर वेरी मच लॉयल विद देयर ऑर्गेनाइजेशंस. और यूजुअली हम जापानीज के बारे में कहते हैं कि वो जापानीज जो है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं फिर मर के निकलते हैं. तो मर के निकलने का मतलब ये इतने ज्यादा लॉयल होते हैं कि वो फिर अपनी पूरी जिंदगी उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुजार देते हैं. और इवन के इफ दे आर बीइंग ऑफर्ड द गुड सैलरीज फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन, they will not be willing to leave their own organization. They are so much loyal. So that is again this sort of relationship these sort of Japanese organizations have with their laborers, with their employees. Now class, here I would like to discuss again the organization with respect to the organizational perspective, that in an organization's managers are concerned with three types of resources. You must be aware, already aware of all of these resources. Now, what are these resources? These are the physical resources, financial resources, and the human resources. Now, what are the physical resources? Like building, factory, machinery. All these are the physical resources which the manager will have to deal with. The other one are the financial resources. Financial resources, again, in order to run the factory, in order to maintain the building, you will need the money. So all that monetary resources are the financial, जो आपके financial resources हैं उसको आपने अच्छे तरीके से डील करना पड़ता है. इसमें आपके क्रेडिट आ जाते हैं, लोन आ जाते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं, अपना कैपिटल यूज करते हैं. All these are the sort of financial resources which the managers deal with in the organizations. Now, third and the most important resource जो हम यूज करते हैं in the organizations, उसको हम कहते हैं human और labor resources. इसको already हमने first lecture में डिस्कस किया था. Now, if the जो आपकी human resource है, अगर आपकी अच्छी होगी
तो आपके जो बाकी रिसोर्सेज हैं दैट विल वर्क वेल. नाउ व्हाट आई मीन टू से दैट सपोज के आपके फिजिकल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं और यू हैव द फाइनेंसेस मनी, लेकिन अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगी जो इन रिसोर्सेज को सही तरीके से मेंटेन करेगी, इनको सही तरीके से चलाएगी, तो आपके जो बाकी रिसोर्सेज हैं दे विल नॉट वर्क. ठीक है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्स, लाइक फिजिकल रिसोर्सेज लाइक कंप्यूटर. कंप्यूटर को आप प्रेस करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा. कोई प्रॉब्लम है, आपकी वायर ठीक करनी है, तो उसको आप ठीक करेंगे तो वो आप, बट विद द ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज नॉट द केस. आप किसी को ऑर्डर करेंगे कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग को किसी चीज का ऑर्डर करते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने विलिंगली अपने आपके ऑर्डर को जो ओबे करता है, या वो कितने विलिंगली अपना काम जो है परफॉर्म करता है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ह्यूमन रिलेशंस हैं दैट आर वेरी क्रिटिकल in running the organizations to the optimal and the best possible use. That is something you have to emphasize. That is you'll have to emphasize. So that is very important. You'll have to focus on the human relations, and again conflict resolution जो है that is again, अगर ह्यूमन रिलेशंस को आप सही तरीके से यूज नहीं करेंगे और कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी परफॉर्मेंस इन रियल परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगी. तो इस वजह से ह्यूमन रिलेशंस की जो रिलेशनशिप है विद द परफॉर्मेंस दैट कैन नेवर बी इग्नोर्ड. So it is very important for the managers that how important you have the personal skills or the human skills, or the how you will use the interrelationships with the people. Again, I would say all of these things are related to the individual performance as well as the organizational performance. So this जो two way relationship है, ये जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, that is very important. कि अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं सही होंगी एम्प्लॉयज के साथ, लेबर्स के साथ, तो यूर नॉट ओनली योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विल बी इफेक्टेड, बट योर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस विल आल्सो बी इफेक्टेड. ओके क्लास, इधर दो कॉन्सेप्ट में इधर और आई वुड लाइक टू डिस्कस टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं एम्पैथी, एंड द अदर वन इज द एपैथी. एम्पैथी and the apathy. Now, apathy का क्या मतलब होता है? Apathy is something somebody is unconcerned with what's happening in the organization. You don't have any interest in the organization affairs, then nothing will happen. That is the empathy. Now again, I repeat it. There are the two important concepts. एक होता है apathy और एक होता है empathy. Apathy, A-P-A-T-H-Y, apathy. It is something or somebody is unconcerned with what is happening in the organization. So you don't have any interest in the organizational affairs. It is इसका जो मीनिंग है या इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं एपैथी. एक और जो कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करते हैं दैट इज द एम्पैथी. एम्पैथी जो है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द labor relations or the human relations. Empathy is the situation where you could choose yourself in the place of other persons. That is, if you see if somebody is not doing something in the way you want to let him do, then you empathize with other person. Not sympathize, I would say you will empathize. When you put yourself in the place of other person, then you can understand that why he is not doing in the way or in the right way you want him make to do. So empathy again क्लास थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो मैनेजर्स के लिए ये एम्पैथी का जो कॉन्सेप्ट है, EMPATHY, एम्पैथी, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सिचुएशन होती है विच इज टू बी डेल्ट बाय द डिफरेंट मैनेजर्स, तो वो मैनेजर क्या करता है उस सिचुएशन में अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखता है कि क्या हाउ ही विल बिहेव. दैट इज मेंट बाय एम्पैथी. So it is a situation where you could choose yourself in the place of other person. That is important.
If you see if somebody is not doing something in the way you want to let him do, then you empathize with the other person. Now it means कि अगर आप समझते हैं कि आपका कोई ऑर्डर वो ओबे नहीं कर रहा, आपका लेबर जो है वो ओबे नहीं कर रहा, तो आप उसको उसकी जगह अपने आप को रख के देखेंगे कि वो ऐसी क्या सिचुएशन है या क्या क्यों वो ऐसा नहीं कर रहा। आप उसको उसकी जगह पे अपने आप को रखकर देखते हैं। इस जो सिचुएशन को या इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एम्पैथी। नो अगर ये एम्पैथी जो है ये फॉलो करे आपका ह्यूमन जो आपका मैनेजर है, तो उसकी बहुत सी सिचुएशंस जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। He may have some important issue which may be important. For example, why is not behaving in the way you want to behave? तो you'll have to see कि उसका कोई ऐसा important issue तो नहीं है जिसकी वजह से वो आपके ऑर्डर को obey नहीं कर रहा या वो willingly अपना काम नहीं कर रहा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैनेजर्स जो हैं अपने आप को उस सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को दूसरी जगह पर दूसरे पर्सन की जगह पर रखकर देखते हैं कि व्हाई ही इज बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बिहेवियरल मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी और ह्यूमन रिलेशंस, लेबर रिलेशंस, these are very much important. इसका कॉन्सेप्ट जो है it should be very clear to you. Now, class, when organizations hire you, that is the required combination of you, yourself, your relations, family, your skills. So you are actually the organization, when the organization hire you, तो वो आपकी एक टोटलिटी ऑफ पर्सनैलिटी को हायर कर रही होती है। यानी वो सिर्फ आपको एज अ पर्सन हायर नहीं कर रही होती, वो आपको हायर कर रही है, आपकी रिलेशंस जो हैं वो भी साथ ही हायर कर रही है, आपकी फैमिली टर्म्स, आपकी टेक्निकल नॉलेज, आपका स्किल्स। सो यू आर बीइंग हायर्ड एज अ टोटलिटी ऑफ पर्सन्स। सो मेरे बताने का मकसद ये है कि जब आप अगर सपोज कि यू आर अ टेक्निकल पर्सन, यू आर आप एक इंजीनियर हैं और आपको ऑर्गेनाइजेशन कोई हायर करती है, तो वो सिर्फ आपकी टेक्निकल पर्सनैलिटी को हायर नहीं कर रही, वो आपकी टोटलिटी ऑफ पर्सनैलिटी को हायर कर रही है। ठीक है, उसमें इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ वो आपका टेक्निकल पर्सन नहीं देखेगी, दे विल हैव टू सी दैट हाउ यू बिहेव विद द अदर पीपल, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, दैट व्हाट यू विल गिव द आउटपुट टू द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हायर द टोटलिटी ऑफ पर्सन, सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल को हायर नहीं कर रही, आपकी मैनेजरियल स्किल्स, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, योर रिलेशनशिप्स विद योर कोलीग्स, योर बॉसेस, योर सबऑर्डिनेट्स, ये सब चीजें उसने देखनी होती हैं और उसको एज अ टोटलिटी वो देख रही होती है। नो अगेन जापान के बारे में आपको मैं बता रहा था, जो उनकी लॉयल्टी का जो लेवल है, दैट इज अगेन लोग पूरी दुनिया उसकी एग्जांपल देती है। तो उधर आपके जब जापान की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उधर एक जो है एक उनकी रूटीन है कि वो जब भी सुबह आते हैं, तो जैसे अब हमारे यहाँ स्कूलों में असेंबली होती है ना, तो उधर भी एक असेंबली होती है और वो कंपनी का तराना गाते हैं उधर, in order to show the loyalty to the organizations। और वो ये सारे मिलकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी लेबर है, बॉसेस हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, सारे मिलकर वो तराना गाते हैं। और वो उसका मकसद क्या होता है कि वो ये शो कर रहे होते हैं कि दे आर वेरी मच लॉयल्टी, दे हैव so much loyalty with the organizations, you know। So most of the problems relate to the interpersonal relationships। अगर हम organization की बहुत सी problems को देखें, तो इसमें बहुत सी जो problems है, I would say कि 80% जो problems हैं, वो यूजुअली रिसर्च बता रही है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा, रिसर्च बताती है कि आपकी जो 80% प्रॉब्लम्स है वो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स से रिलेटेड होती हैं। यानी अगर आप अपनी इंटर रिलेशनशिप्स को ठीक कर लें, या लेबर के साथ रिलेशनशिप्स को, बाकी एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप को ठीक कर लें, तो आपकी जो 85% प्रॉब्लम्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी सॉल्व्ड। नो अगेन अभी हमने डिस्कस किया कि जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। Human resources, again I would say that is the most complex resource, and the complexity of the human being जो है, that make it very hard to be managed। हम अभी तो वैसे पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होने चाहिए और उनके साथ आप अच्छे तरीके से डील करें और सम एम्प्लॉइज के साथ रिलेशनशिप डील करें, बट दैट इज नॉट वेरी सिंपल थिंग। दैट्स व्हाई आपको एक पूरा ऑफर किया जा रहा है, कोर्स किया जा रहा है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। जो ह्यूमन है दैट इज एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब वो एक मशीन तो नहीं है कि आप उसको बटन ऑन करेंगे तो वो काम शुरू कर देगा, बटन कम करेंगे तो वो काम खत्म कर देगा। They have their own minds, they have their own personalities, they have their own styles, they have their own assumptions।
ये सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद आप देखेंगे कि वो कौन-सी चीज़ है जिससे आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो ह्यूमन को जो डील करना है, दैट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई वुड कोट द अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल हमारे लीडर हैं, उन्होंने कहते हैं कि इस सदी में एक ही इकबाल आया, उसके बाद इकबाल नहीं आया था। उनकी ज़ाहिर है जो एक विज़न था, वो आपको पता है कि सबका पाकिस्तान का विज़न उन्होंने दिया। उनका एक बड़ी पर्सनैलिटी जो थी उनकी, दैट वाज़ यूनिक पर्सनैलिटी। अच्छा, उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने उनका ये अगर आप उनको देखें, वो कहते थे कि ह्यूमन जो है बीइंग, दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स यू नो स्ट्रक्चर। इसको समझना, इसको दैट इज अगेन ये पूरा एक साइंस है और पूरी एक आर्ट है। और वो कहते हैं ना, जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। खुद को पहचानना, लोगों को पहचानना, उनकी पर्सनैलिटी को जानना, उनकी assumptions, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, that is again a science and art, and it is not very easy to do all that sort of things. लेकिन if you are being able to do that things, and if you are being able to build a good relationship with the employees, तो आपकी पूरी जिंदगी भी आसान हो जाती है और आपकी 80% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। Now class, either I would again like to discuss the goals on the human relations। जो different goals होते हैं ह्यूमन रिलेशंस में, उसमें जो एक सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं विन विन सिचुएशन। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये मैं नोट्स ये आपको सेंड कर दूंगा, इसको आपने डिटेल में भी देखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। जो विन विन सिचुएशन है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द डिफरेंट पर्संस ऑलवेज इंटेंट्स टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ विन विन सिचुएशन। और अगर ऐसी विन विन सिचुएशन आपकी अचीव हो जाती है तो इसको हम कहते हैं दैट इज द आइडियल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। विन विन सिचुएशन क्या होती है कि जब आप किसी के साथ पर्सनल एक आपके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं और एक आपके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होते हैं। यानी पर्सनल इंटरेस्ट मीन्स आपके लेबर के इंटरेस्ट होते हैं, आपके एम्प्लॉय के इंटरेस्ट होते हैं, और दूसरी तरफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट होते हैं। अगर हम कोई ऐसा वे निकाल लें और कोई ऐसा तरीका निकाल लें कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट भी अचीव हो जाएं, यानी आपके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं, जो लेबर के गोल्स हैं, वो भी अचीव हो जाएं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट भी अचीव हो जाए, उनके गोल भी अचीव हो जाए, तो इस सिचुएशन को कहते हैं दैट विल बी सॉर्ट ऑफ विन विन सिचुएशन, एंड दैट इज द आइडियल सिचुएशन all the managers would like to have within their organizations. So if either employees or the employer is not satisfied, then this relationship is not ideal. So that will not be the win-win situation. The win-win situation will be the situation in which both the employees and the employers will be satisfied. Both should meet the needs of each other. So now again, this is a two-way relationship, how work and the personal life relate each other. Now that is again very important. एक आपकी पर्सनल लाइफ होती है और एक आपकी वर्क लाइफ होती है। नाउ अगेन, जो भी मैंने आपको डिस्कस किया कि जब हम किसी एम्प्लॉय को, किसी लेबर को हायर करते हैं, तो हम किसी एक पर्सन को हायर नहीं कर रहे होते, या किसी एक उसकी स्किल को हायर नहीं कर रहे होते हैं, हम उसकी टोटलिटी ऑफ पर्सन को हायर कर रहे होते हैं ना। उस टोटलिटी ऑफ पर्सन में उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी पर्सनल लाइफ भी आ जाती है। पर्सनल लाइफ, नाउ एवरीवन हैज द पर्सनल लाइफ एज वेल एज द वर्क लाइफ, और ये जो आपस में इंटर रिलेट भी होती है, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ये भी ड्यूटी है, या मैनेजर की ये भी ड्यूटी है कि वो इसको रिलेट करे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क लाइफ एंड द पर्सनल लाइफ। और बहुत से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो मैनेजमेंट में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हाउ यू शुड हैव द सॉर्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन द पर्सनल लाइफ एंड द वर्क लाइफ, एंड दिस इज नाउ डिक्लेयर्ड एंड कंक्लूडेड दैट जो बैलेंस है बिटवीन द वर्क लाइफ एंड द पर्सनल लाइफ, that is not only the responsibility of the individuals or the employees, that is also the responsibility of the organization or the managers who are dealing those employees. So work and the personal life have the reciprocal influence of each other. So जो हमने इसमें important concept जो भी discuss किया, that was the win-win situation, how we can have the win-win situation. So whenever there is a conflict between the managers and the employees, so you have to find out a sort of solution in which you can have the win-win situation. So neither of the party will lose, but both of the parties will gain something. That is the actually win-win situation.
नो अगेन क्लास, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और मैं डिस्कस करता हूँ। ये आप लोगों ने जब दायरा मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो आपने नोट कर लेनी है सारी चीज़ें, दीज आर इम्पोर्टेंट। इसमें आपको नोट्स में भी मिलेंगी जो मैं आपको दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें अगर नोट्स में नहीं है तो यू विल हैव टू राइट इट डाउन एज योर नोट्स बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी दीज आर इम्पोर्टेंट। इसमें जो एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस अभी आज के लेक्चर में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में आपको बता रहा हूँ जो हम ह्यूमन रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो भी हमने डिस्कस किए हैं, इसको हम कहते हैं लोनलीनेस, आइसोलेशन, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। तो इसमें जो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लोनलीनेस, ठीक है। एक आपकी होती है सोशल लोनलीनेस और एक होती है इमोशनल लोनलीनेस। सोशल लोनलीनेस, व्हाट इज दिस सोशल लोनलीनेस? सोशल लोनलीनेस का मतलब है you if you have no friends, no people around you, and you have not the social skills, you don't want to have this sort of interaction with the people, इसको हम कहते हैं that is the social loneliness. Again I am repeating, there are the different forms of loneliness. एक होती है social loneliness. Social loneliness का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल ignored feel करते हैं, या आपके if you have no friends, no people around you and you don't have the social skills, और आप प्रॉब्लम फील करते हैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, तो इस किस्म की जो लोनलीनेस होती है इसको हम कहते हैं सोशल लोनलीनेस। जो दूसरी लोनलीनेस होती है उसको हम कहते हैं इमोशनल लोनलीनेस। इमोशनल लोनलीनेस का मतलब ये होता है कि दिस अ सॉर्ट ऑफ लोनलीनेस which affect your own personal performance. If you are not encouraged, you will not be motivated, so you will not be interested in the work. So this sort of situation will be known as emotional loneliness. So emotional loneliness का मतलब ये होता है कि आप जो है इससे आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होती है, और यू आर नॉट इनकरेज, आप इनकरेज फील नहीं करते, डाउन फील कर रहे होते हैं, उससे आप मोटिवेटेड फील नहीं करते, और अल्टीमेटली आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है वो आपका इफेक्ट हो रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज द इमोशनल लोनलीनेस। नाउ द प्रॉब्लम इज, इसको जो हमने डिस्कस किया, हाउ यू विल ओवरकम दिस सॉर्ट ऑफ लोनलीनेस, दैट इज द मेन पॉइंट, दैट इज द important concept which the managers should know about. Now इसकी एक जो इसका वे है हाउ टू ओवरकम दिस लोनलीनेस, तो एक मैं कोटेशन आपको बताता हूँ, या आप नोट करें, दैट इज एक्सेप्ट द पीपल दे द वे दे आर, that is accept the people the way they are. Inadequate social relations, you don't accept people they the way they are. Now one of the reason जो आप loneliness फील करेंगे, जो इमोशनल लोनलीनेस है और जो सोशल लोनलीनेस है, उसकी एक रीजन ये होती है कि आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते एज दे आर। inadequate social relationships, you don't accept the people the way they are. इसके लिए हमेशा आप याद रखें, accept the people the way they are. Every people have this, प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी इसमें होते हैं। they are sort of, every person जो है they are we are sort of diversifiers. आप में कुछ क्वालिटीज भी होंगी, कुछ आपकी वीकनेसेस भी होंगी, तो try to accept the people the way they are. Think yourself as a good person. Emotional, आप अपने आप को, you will have to have the confidence on you, and you should think yourself as a good person. You should be confident you are good, you can act confidently, and you can handle the different situations. So अगर ये आपकी feelings नहीं होंगी, emotion नहीं होंगी, तो you can not overcome the different situations. Now, labor relationship जो है उसके लिए बड़ी important है कि you'll have the confident, you'll have the interpersonal sort of relationships, you'll have to overcome all of these social barriers, social skills आपके पास अच्छे होने चाहिए, you'll have to accept the people, you'll have to keep in mind कि कोई भी इंसान जो है ideal नहीं होता, उसके qualities भी होती हैं, उसकी weaknesses भी होती हैं, and you'll have to accept the people the way they are, और उसको आप जो उसकी you'll have to नो कि आपने किसी की क्वालिटीज को किसी के अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर उसकी वीकनेस है तो आपने उनकी वीकनेस को किसी से ओवरकम करना है, या किसी से उसको इम्प्रूव करना है।
तो as far as the labor relationships are concerned, these concepts are very important. इस वजह से मैंने आज concepts आपके साथ डिस्कस किए हैं. यूनियंस के साथ किसी किसी डील करना है. अल्टीमेटली हमारा ये जो मैंने आपको बताया था लेबर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हाउ यू विल हैव टू डील विद द ग्रुप्स ऑफ द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू हैव टू डील विद द यूनियंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस. लेकिन उससे पहले जो आपके एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स हैं, एम्प्लॉय ओवरऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द सोशल रिलेशनशिप्स के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू बी डिस्कस्ड. इन सब चीज़ों को आपने जो है याद रखना है. अच्छा, ये कुछ नोट्स हैं जो आप लोगों ने अभी जो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द कल्चर एंड पर्सनैलिटी. Culture and personality. Now, these again are the very important concepts as far as the human relationships are concerned or the labor relationships are concerned. Culture and the personality, these are very important concepts. कल्चर को भी हम देखते हैं, फॉर्मली भी इसको डिस्क्राइब करते हैं. व्हाट इज द कल्चर, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा. कल्चर को हम कहते हैं दैट इज द ग्रुप ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स. अगर हम इसमें लिटरेचर में देखें तो कल्चर को हम कहते हैं देयर आर द लॉट ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस. देयर कैन बी द हंड्रेड्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द कल्चर. तो ये एक बहुत सिंपल चीज नहीं है. दैट इज द ग्रुप ऑफ द डिफरेंट फैक्टरीज, जिसे हम कहते हैं ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं. कल्चर की डायमेंशंस जो लिटरेचर में आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, थोड़ा सा हम डिस्कस भी करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम इसको जो है एक फॉर्मली इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं. बाय एडवर्ड हाइलर ने एक जो डेफिनेशन दी थी कल्चर की, कि कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, arts, morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society. Now, again, I'm repeating this definition. This was given by Edward Hiller. There's a lot of definitions which are given by the different theorists. You can see in the literature and in the books. But I have chosen this definition because this is a more comprehensive definition. Culture is that complex whole. Complex whole means that is not the name of the simple thing. That is the group of the different factors. That is the group of the different dimensions. Which includes में क्या चीजें include हो सकती हैं? That include the knowledge. It include the beliefs. It include arts, morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society. Now, इसमें कल्चर को जब हम डिस्कस करते हैं तो अगर इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों ने एनवायरनमेंट को शायद डिस्कस किया होगा. जब हम ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं तो आपकी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है और एक इंटरनल एनवायरनमेंट होती है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होती है विच एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और विच आर नॉट कंट्रोलेबल बाय द मैनेजर्स. इसमें बहुत सी चीजें लाइक पॉलिटिकल आपके सिनारियोज आ जाते हैं, आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज आ जाती हैं, आपका सोसाइटी आ जाती है, कल्चर आ जाता है. जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कल्चर इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. कल्चर एक ऐसी डायमेंशन होती है जो विच कैन बी द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दैट कैन आल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट. तो अभी जो हमने ये डेफिनेशन डिस्कस की है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यानी पूरी की पूरी सोसाइटी उसका एक कल्चर है या पूरी कंट्री का एक कल्चर होता है. ठीक है. लेकिन इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होती है? दैट इज द एनवायरनमेंट व्हिच एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन and which is controllable by the organization. So when we discuss the culture as the part of the internal environment, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ठीक है. हर ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है. सो अगर ओवरऑल हम देखते हैं दी पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो हम बात कर रहे होते हैं सोसाइटी की, हम बात कर रहे होते हैं पूरी कंट्री की कल्चर की. ठीक है. लेकिन अगर हम उसको एज द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट देख रहे होते हैं तो उसमें हम बात कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की. ठीक है. डिपार्टमेंट की कल्चर की, उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर कल्चर की. तो ये जो विद रिस्पेक्ट टू दैट जो है कल्चर कैन बी द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट. उसकी हमने जैसे डिस्कस किया कि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें हम डिस्कस करते हैं. नो, इसमें एक दो चीजें जो है आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. जैसे मैंने कहा कि कल्चर की बहुत सी डायमेंशंस हैं. अभी जो डेफिनेशन भी हमने देखी, देयर कैन बी द हंड्रेड्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द कल्चर.
लेकिन ये 3 डायमेंशन जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो अक्सर मैं डिस्कस करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द कल्चर। एक उसमें होती है नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स। नाउ आई एम रिपीटिंग, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स, these are the very important dimensions of the culture. Norms क्या होता है? What are the norms? Norms का मतलब होता है what thing is being acceptable and what thing is being not acceptable in a different culture, in a different society, in the different organizations. Now बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं एक्सेप्टेबल होती हैं और कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। नाउ इसकी मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ, बट नाउ इसको एग्जांपल से पहले बिलीव्स को या हम डिस्कस कर लेते हैं वैल्यूज को। वैल्यूज को भी अगेन अगर हम डिस्कस करें तो उसको हम कहते हैं व्हाट इज कंसीडर्ड गुड एंड व्हाट इज कंसीडर्ड बैड। बाज दफा जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज अच्छी कंसीडर होगी, वही चीज जो है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड गुड। So what is the acceptable behavior, what is not acceptable behavior, what is considered good, what is considered bad, that is very important, and all these are the part of the culture. Now इसकी मैं जस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर सपोज अगर आप प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, तो उनके कल्चर में ये चीज है कि आपने बिल्कुल टाई 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 के बगैर नहीं आप जा सकते। टाई जो है और फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए और टाई होनी चाहिए, दैट शुड बी। अगर आप टाई नहीं लगा कर जाएंगे तो वो कहते हैं यू आर डूइंग अगेंस्ट द डिसिप्लिन, दैट इज द पार्ट, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द कल्चर। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं तो उधर कल्चर डिफरेंट है, उसमें आप शलवार कमीज में या नॉर्मल दूसरे ड्रेस में भी जाते हैं तो वो उसको दे डोंट फील बैड। तो यू सी एक ही चीज जो है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी कंसीडर हो रही है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको डिफरेंट तरीके से हम कंसीडर कर रहे हैं। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द कल्चर। इसके अलावा बहुत सी डायमेंशंस है, इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया देना था कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द कल्चर। कल्चर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कल्चर एंड पर्सनालिटी को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिलेशंस एंड विद रिस्पेक्ट टू द labor relations. It makes you a capable machine to do the different things in different situations. यानी अगर आपको कल्चर को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, लोगों की पर्सनैलिटीज को समझ जाएंगे, तो you will become a capable machine to do the different things in the different situations. कल्चर का मतलब, स्टडी करने का मतलब ये होता है कि you should know how to behave in a particular situation, ठीक है, in a particular situation. कल्चर जो है अगेन मैंने जो आपको बताया कि एक इतनी इजी चीज नहीं होती, दैट इज और अगेन आजकल तो कल्चर्स आर गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबलाइजेशन। बहुत से न्यू सब कल्चर्स आ गए हैं, सब कल्चर्स का कॉन्सेप्ट भी अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन और ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट सोसाइटीज, बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है कल्चर का। So as a manager, if you cannot assess the person or the situation well, you cannot handle the situation. So that's why हम चीजें discuss कर रहे हैं कि you should know that how to assess the particular person or the situation, and accordingly you should know that how to handle that particular situation in a particular way. For example, if I consider the employees within the organization, आप लोगों ने different इसके motivational theories भी पढ़ी होंगी, leadership theories थोड़ा सा हम discuss भी करेंगे इसको further, और आपको पता है कि हर theory के पीछे different assumptions होती हैं, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एक दो लेक्चर्स में। So why I was saying कि जो human है there is a very complex creature, labor जिसमें आपकी labor आ जाती है, आपकी employees आ जाती है, because डिफरेंट लोग जो हैं आप देखेंगे कि डिफरेंट तरीके से मोटिवेट हो रहे होते हैं। कुछ लोग जो है मॉनिटरी से, अगर उनकी पे अच्छी हो तो उससे वो मोटिवेट हो रहे होते हैं। कुछ लोग इसको समझते ही कुछ नहीं है, वो कहते हैं हमें रिस्पेक्ट मिलेगी तो हम मोटिवेट होंगे। कुछ लोगों को अच्छे तरीके से आप सिर्फ वेल डन कह देंगे, गुड बाय कह देंगे, उसी से मोटिवेट हो जाते हैं। उसको अच्छे तरीके से सलाम कर लेंगे तो वो उसी से खुश हो जाते हैं कि आज मेरे बॉस ने आज मुझे सलाम किया और अच्छे तरीके से बात की, उससे मोटिवेट हो जाएंगे। So what I want to say is there are the different aspects, there are the different personalities of the different persons.
कुछ लोग जो है some values money, some value respect, and there can be the different sources of motivation for the different people. So as a manager, you should assess that कि आप what is the source of motivation for you. आप किसी कैसे उसको motivate कर सकते हैं. तो as a human resource manager, this is important for you कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके जो different labors है, आपके जो different employees हैं, what they have in mind and how you can be able to motivate them, and how you will be able to do the work in the way you want to let them do work, you know. So we were discussing the culture or cultural communication. This is the some of the different dimensions. There's a lot of dimensions of which values, norms, beliefs, knowledge, art, rules, laws, all these other different important dimensions of the culture. लेकिन इसमें हमने मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत से ये जो कल्चर का कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा मिक्सअप भी हो गया और कॉम्प्लेक्स भी हो गया. तो इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं दैट इज सब कल्चर. सब कल्चर एक तो कल्चर है और एक सब कल्चर. Set of the people with distinct set of behaviors and beliefs that differentiate them from a larger culture of which they are the part. ठीक है. यानी इसका मतलब ये है कि एक कल्चर के अंदर जो है डिफरेंट सब कल्चर्स भी जो है वो डेवलप हो जाते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर कल्चर है उस ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर भी सब कल्चर्स जो है डेवलप हो सकते हैं. नाउ विद रिस्पेक्ट टू द लेबर रिलेशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग द फॉर्मल जो इसकी डेफिनेशन है सब कल्चर की. क्या डेफिनेशन है? सेट ऑफ पीपल विद डिस्टिंक्ट सेट ऑफ बिहेवियर्स एंड बिलीव्स that differentiate them from a larger culture of which they are the part. For example, youth. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यंगस्टर्स हैं, यूथ, हो सकता है वो उनका एक डिफरेंट लाइफस्टाइल हो जाए, वो एक डिफरेंट कल्चर डेवलप हो जाए. ड्राइवर्स का आपने देखा होगा, ड्राइवर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनका डिफरेंट कल्चर है, दे हैव डिफरेंट स्टाइल्स, यू नो. वो एक अलग से सब कल्चर डेवलप कर लेते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस. आर्मी ऑफिसर्स को देखें कि उनका एक डिफरेंट कल्चर है और सब कल्चर है. So subcultures help producing relatively different persons than the other subcultures. So ये सारे subcultures जो होते हैं वो एक आपस में किसी ना किसी point of view से एक दूसरे को differentiate कर रहे होते हैं, and subcultures helps producing relatively different personalities, you know. In this way, within the culture जो है different subcultures भी create हो सकते हैं. Or you should know about the concept of these subcultures. Now class, एक और जो important concept है which I would like to discuss here, that is the social system. Social system, that is again very important. Social system is the pattern of social acts through which personal and collective goals are achieved. Again, is a pattern of social acts through which the personal and collective goals are achieved. The needs of individuals and groups are also governed by the pertinent social system to maintain its own subcultures or shape. So, for example, the drivers, अभी हमने जो example drivers, army officers, all have the different social system. इनका जो social system है, they have the different social systems which shape their actions. Now इसका मकसद क्या है social system का? ये social system एक develop हो जाता है within the subcultures जो उनको गाइड कर रहा होता है, उन लोगों को गाइड कर रहा होता है कि what is right and what is wrong, what is good and what is considered bad. So all these things are become the part of the social system. So I would like again to repeat this definition. The social system is a pattern of social acts through which personal and collective goals are achieved. इसमें आपके पर्सनल गोल्स भी अचीव होते हैं, कलेक्टिव गोल्स भी आप अचीव कर सकते हैं. द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर आल्सो गवर्न्ड बाय द pertinent social system to maintain its own subcultures or shape. यानी जो सब कल्चर है जो वो शेप कर लेता है अपने आप को in within a particular social system in which they behave in a particular way, which shape their actions, which shape their behaviors, what is considered right and what is considered wrong, what is considered good and what is considered bad. So this social system guide you that what is right and what is wrong, and it will help you. Yeah, it will help the people which are belonging to that particular social system or the subculture. So what is considered good and what is considered bad, and how
they behave in a particular situation. So you learn how to act in particular situation. ये सब चीजें डिस्कस करने का जो कल्चर हमने डिस्कस किया, सब कल्चर डिस्कस किया, सोशल सिस्टम डिस्कस किया. Okay, let's have a little break because of Azan. So class, we discuss about the culture, we discuss about the subculture, we discuss about the social system. Another जो important concept अभी हम discuss करेंगे उसको हम कहते हैं social group. Social group. Now again ये सब चीजें discuss करने का मकसद क्या है कि as a manager, as a human resource manager, you should know about the different cultures which are being existed overall macro level पे भी और micro level पे भी. Within the country, within the province भी आपको पता होना चाहिए और within the organization भी आपको पता होना चाहिए. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसे सब कल्चर तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन these सब कल्चर्स एग्जिस्ट, so you should be well aware of these subcultures. What are the social systems, the people who behave or belong to these social systems. So अगर आपको ये सब पता होगा तो it will help you to act in a particular manner according to the particular situation. Because जो मैनेजर का काम होता है कि जब कोई सिचुएशन आ जाती है तो यू विल हैव टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन द ऑप्टिमम मैनर, सो दैट अगेन जो आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, बोथ कैन बी अचीव्ड. जो हमने विन विन स्ट्रेटजी जो डिस्कस की थी, दैट इज द आइडियल जो सिचुएशन होती है. लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ों का पता ही नहीं होगा, सब कल्चर्स क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, सोशल सिस्टम क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप फिर आपको वो सिचुएशन को हैंडल करने में मुश्किल होगी. नाउ इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस कर रहे थे, दैट इज द सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप इज अगेन एग्रीगेट ऑफ पीपल दैट लिव और वर्क टुगेदर and in some ways depends on each other for the for its well being. सोशल ग्रुप ये होता है कि आपके कुछ लोगों का विद इन द सोशल सिस्टम जो आपस में लोग क्लोज होते हैं, वो एक आपस में ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम सोशल ग्रुप कहते हैं. एंड दैट इज एन एग्रीगेट ऑफ पीपल जो आपस में रह रहे होते हैं, आपस में काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं. जिससे किसी कोलीग्स होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और आपस में चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं. तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है इसको हम कहते हैं दैट इज द सोशल ग्रुप. Again, I'm repeating, social group is an aggregate of people that live or work together and in some ways depends on each other for its well-being. उसी example जो है different colleagues, जो close colleagues होते हैं जो आपस में चीजें discuss कर रहे होते हैं and they make the different groups within the different organizations. So that is the another concept, that is the social group. Now इसमें एक और जो concept है, that is the peer group concept. Peer group. Peer group is a group or subgroup of society in which membership is determined by similarity of age, sharing the same social status and some other similar characteristics or values. No, ये आप जो मैं different चीजें discuss कर रहा हूँ, all these things are interrelated with each other. So social group में ही एक peer group बन जाता है जिसको हम कहते हैं the subgroup of society. ये आपकी organization में भी हो सकता है, ये आपकी society में भी हो सकता है. In which membership is determined by the similarity of age. यानी जो different age groups के लोग हैं वो आपस में एक अपना peer group बना लेते हैं. Youngsters जो हैं, आपने देखा होगा young doctors के issue आपने देखते रहते होंगे आप टीवी में, young doctors, यानी वो
एक तो डॉक्टर्स हैं और एक यंग डॉक्टर्स ने अपना एक पेयर ग्रुप बना लिया और वो अपने इश्यूज डिस्कस कर रहे होते हैं, शेयरिंग द सेम सोशल स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस बस वो सेम होता है, और बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स उनकी सेम हो सकती हैं, बहुत सी वैल्यूज नॉर्म्स बिलीव्स उनकी सेम हो सकती हैं, और एक सर्कल बना लेते हैं ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं दैट इज द पेयर ग्रुप. Now, the another जो important concept इसमें human relations के point of view से या labor relations के point of view से, that is the family. Family को हम कहते हैं कि family is a social institution comprising two or more individuals who have goals and values, have long-term commitments to one another, and usually reside in the same dwelling. Family contributes much more to an individual's personality than the other things. जो आपकी ये चीजें एक और भी वजह से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पर्सनैलिटी, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, सम ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक्चुअली आपकी जो डिपेंड बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है. एक चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी जिस पर डिपेंड कर रही होती है, दैट इज दी योर फैमिली बैकग्राउंड. और लिटरेचर या रिसर्च ये बताती है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपके जो शुरू के 3 या 4-5 साल होते हैं जब आप घर में गुजारते हैं, अपने पेरेंट के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारते हैं, घर में रहते हैं, तो आपका ये पर्सनैलिटी उसी वक्त से डेवलप होना शुरू हो जाती है, और दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड व्हेन योर पर्सनैलिटी जो है डेवलप होती है. तो ये जो फैमिली बैकग्राउंड है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी. तो उसके बाद आप कॉलेज में स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, एनवायरनमेंट आपकी ओपन हो जाती है, आप ओपन एनवायरनमेंट में जाते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हैं. तो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच कैन इफेक्ट योर और व्हिच हेल्प इन बिल्डिंग द पर्सनालिटी. इसमें दो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं द पर्सनालिटी बिल्डिंग, एक आपकी फैमिली होती है और दूसरी आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है. बोथ ऑफ दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिल्डिंग ऑफ योर पर्सनालिटी. नो अगेन पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी सोशियोलॉजी में, ह्यूमन रिलेशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको भी हम डिस्कस करते हैं. पर्सनालिटी को हम कहते हैं, पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ लाइफ he or she spends in the environment and genes come from the family. यानी इसकी जो मेन जो पर्सनालिटी का जो है वो जो डेवलपमेंट है, that comes from family. So personality is the sum of habits, traits, characteristics of an individual. It is actually a force or power to do things. Some people have more power and some have less. Example, an army officer has the power and knowledge about the security issues, whereas a professor may have knowledge and power on educational issues. So, personality की again there are the different aspects होते हैं, different traits होते हैं. Another important aspect of personality is the intelligence quotient, जिसको कहते हैं IQ. पर्सनैलिटी सम टोटल ऑफ मैनी थिंग्स. इसमें हमने अभी डिस्कस किया, फैमिली डिपेंड कर रही होती है, आपकी हैबिट्स आपकी डेवलप हो रही होती हैं, एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक आईक्यू आपका अपना जो जिसको मेडिकली हम कहते हैं ना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन अ जॉब सिचुएशन एम्प्लॉयर्स आर इंटरेस्टेड it see how quickly employers can pick up the instructions, learn more new skills, and adopt to the changing demands. Such skills are rewarded and helping in developing a successful career for the individuals and increasing organizational profit. नो अगेन ये जो IQ लेवल होता है या जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, हर एक की पर्सनैलिटी यहाँ जाहिर डिफरेंट होती है, आपका IQ लेवल डिफरेंट होता है. एक्चुअली जो हम डिस्कस कर रहे थे, जब जो ऑर्गेनाइजेशन जब हायर कर रही होती है लोगों को, तो वो एक सम ऑफ द डिफरेंट प्रैक्टिसिक्स को हायर कर रही होती है. उसमें आपकी टेक्निकल स्किल्स भी होती है, सोशल स्किल्स भी होती है, उसमें आपका IQ भी होता है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आइडियली जो ऑर्गेनाइजेशन चाह रही होती है कि वो ऐसे लोगों को हायर करें जिनके पास टेक्निकल स्किल भी हो, जिनके पास सोशल स्किल्स भी हो, इंटरपर्सनल स्किल्स भी हो. Especially if you are hiring the human resource sort of managers, so human skills are the most important than the other than the technical skills. तो ये सब चीज़ों को वो देख रही होती है, and these things vary from person to person. ठीक है, और एज ए मैनेजर यू शुड नो about all of these concepts. In today's organization, people from the diverse cultures and the subcultures come to work. If someone comes from a rural or urban background, they will have the different ways of looking at the different entities, which makes it harder to deal with them. No, this is very important class. ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं,
जैसा कल्चर को भी हमने डिस्कस किया। तो कल्चर में फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने मैंने रीड आउट किया कि आपका अर्बन, आप किसी रूरल उसमें चले जाएं, विलेज में चले जाएं, तो उधर कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसके ऊपर आप किसी अर्बन एरिया में चले जाएं तो उधर कल्चर डिफरेंट होगा। रूरल एरिया में आपको एग्रीकल्चरल आपको हो सकता है लोग मिले और उनको दे नो दी एक्सपर्टीज यू नो अबाउट द एग्रीकल्चर और दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स की उनकी एक्सपर्टीज होती हैं, और दैट इज अगेन डेवलप इन देयर कल्चर, इन देयर पर्सनालिटी। इसके ऑपोजिट अगर किसी अर्बन एरिया में आप चले जाएंगे तो उसमें उनको शायद पता भी नहीं होगा अबाउट दी एग्रीकल्चर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उनकी अपनी एक कल्चर होगा और उनकी अपनी पर्सनैलिटी होगी। So these are the different, cultures which exist in the different areas, and it is the basically the study of the culture and personality that seeks to understand the growth and development of the personal or the social identity as it relates to the surrounding social environment. तो एज अ मैनेजर जो ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर होता है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्टडी को कल्चर अपने study of the culture and personality, that is most important for them, because that helps them understand how the growth and the development of the personals and the social identities are being taking place, and how it relates to the surroundings or in the social environments. नाउ क्लास इसको थोड़ा सा सम अप करूं मैं, बाकी चीजें आपको ये नोट्स में मिल जाएंगी, नोट्स में आपने पढ़नी है, कोई चीज अगर नहीं समझ आ रही होगी तो आपने डिस्कस भी करनी है। सम अप करें ये जो हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं एज यू आर डूइंग स्पेशलाइजेशन इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और स्पेशली ये जो कोर्स है हमारा कि हाउ टू हैव द गुड रिलेशंस विद द एम्प्लॉयज, हाउ टू डील दैट डिफरेंट सिचुएशंस, लेबर सिचुएशंस, यूनियन सिचुएशंस, उसके लिए ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं होगा, लाइक कल्चर क्या होता है, सब कल्चर क्या होता है, सोशल ग्रुप क्या होता है, पेयर ग्रुप क्या होता है, फैमिली का रोल क्या होता है, उनकी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटीज क्या क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता नहीं होगा, ये सारा आपको पूरा चीज़ों का पता नहीं होगा, तो यू कैन नॉट डील विद द ह्यूमन रिलेशंस, यू कैन नॉट हैव द गुड रिलेशनशिप्स विद योर पीपल, विद योर एम्प्लॉयज, विद योर labors, and ultimately with your organization as well. जैसे हमने डिस्कस किया, all these things are interrelated with each other. If you have the good relations with your people, with your employees, with your labor, ultimately you'll have the good relations with your overall, higher ups of the organizations, and overall organizational performance will be improved. Not only the organizational performance will be improved, but the individual performance will also be improved. So all these are the different concepts which जो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। इससे पहले जो हमने जो डिस्कस किए थे डिफरेंट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे जो ओवरऑल मैनेजमेंट के पॉइंट व्यू, लेकिन आज हमने डिस्कस किए हैं ह्यूमन रिलेशनशिप के पॉइंट व्यू से, जो आपकी लेबर रिलेशनशिप के पॉइंट व्यू से जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी हमने सब डिस्कस नहीं किए, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपके पास अब फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। ये नोट्स आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसको बार बार देखें, कोई चीज़ के लिए नहीं है तो उसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं दोबारा, लेकिन ये नोट्स आप लोगों ने गो थ्रू करना है, और आफ्टर गोइंग थ्रू द लेक्चर्स यू विल एक्नॉलेज द व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप बना है उधर एक्नॉलेज करेंगे, उसकी बेस पे फिर आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो दैट इज अगेन ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, एंड अगेन नेक्स्ट हमारा लाइव सेशन होगा, उसमें हम क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट टॉपिक जो है फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, क्लास टेक केयर, अपना ख्याल रखें सब लोग, और मुझे भी दुआओं में याद रखें।